रहे थे, वो होते हम बता रहे आ जाओ ढीली बोले नवीन अरे राउंड टेबल हेलो कैप आप लोगों को स्नैक्स चाहिए फिर स्नैक्स तो बहुत लेट मिलेगा फूड पैकेट में पूरा Bhopal school teachers. Yes. How many students are there? 88 students from Bhopal High Secondary School. Right? So can now what is the procedure? You take your students there. They collect their art. Please. उधर जाइए. 88 students from Bhopal High Secondary School. This is from Please note it down. 88 students from Bhopal High Secondary School. Shailendra Singh, sir. 88 students from Bhopal High Secondary School. सर थोड़ा सा लेफ्ट रहेंगे सर थोड़ा सा लेफ्ट रहेंगे हाँ बस ओके यस सर लो बेटा बेटा कैप 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 लेके जाओ कैप कैप बेटा कैप 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 DPS Bhopal is the third school who have 8 DPS
Holy family, no, Okay, everybody from here who is not related to this, please stand away. This is my last call for all the members who are not associated with today's program to please leave the hangar. I request members who are not associated with this program to please leave the hangar. मैं उन सब सज्जनों से विनती करती हूँ जो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है, वो इस हैंगर से बाहर निकल जाएं। हमारे कार्यक्रम के लिए आए हुए सारे बच्चों को अब हम एंट्री अलाउ करेंगे और जैसे ही इस कार्यक्रम में एंट्री शुरू होती है, हमारा समय शुरू होता है। आप लोग कर लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, वहाँ टाइम नहीं मिलेगा, यहीं पे खड़े होकर कर लीजिए। और जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तब तक खाली हो जाएगा तो वहाँ है ना, यहाँ पे उनको I once again request all the members who are organizers to please go inside the hangar. I request the stewards to please go inside the hangar. I request the timekeeper and witnesses to please go inside the hangar. I also request the members associated with this program from 360 event, please go inside the hangar if you are allotted hangar duty. मोहित जी, आपको भी अब अंदर बंद करेंगे, हाउस अरेस्ट। चलिए जाओ अंदर। बिल्कुल, अब बाहर निकलेंगे, अंदर नहीं रहना है। बिल्कुल। और कोई जाने वाला है? आ जाओ, मैं आते हैं। अब उसके बाद नहीं निकलेंगे सर। और किसी को अंदर जाने की ड्यूटी है, बट घूमना नहीं है, आपको एक जगह रहना है। सोच लीजिए, 4 घंटे में चले। ओके, अंदर रहना है, अंदर आ जाओ। Holy family, please, you were the first one, you have to enter first. Pack up your tiffin. बैच हाथ में रखो, टिफिन को साइड में रखो, अंदर आओ। अब इस कार्ड का फायदा नहीं होगा यहाँ एक बार डांट देने से। Your card, Praveen. Your card. अभी एंट्री चालू कर रहे हैं, स्कैनिंग होगी हर एक की और बच्चे के अलावा और कोई नहीं जाएगा। सर आप साइड में करना नहीं है। 1, 2, 3. Best of luck to everyone entering the hangar, which is going to actually start the program known as most people assembling robots simultaneously. This is the GWR attempt, which around 1,600 students are supposed to do. Welcome all of you. Come.
इरफान सर आप यहाँ रहिए, इन से नहीं। आई कार्ड हाथ में रखो। स्पीड बढ़ाओ ना, आप क्यों रुक रहे हो? आप आई कार्ड सामने रखो। 2 मिनट बाद खा सकते हो। स्पीड बढ़ाओ आप, जितना फास्ट हो सकता है। लगे रहे आराम आराम से। अरे बेटा लाइन में आओ ना। सर आई कार्ड बोलिए। दो मेंटेन करें।
May I request the timekeepers to come and meet me, please? The witnesses, both the witnesses. I request you not to take photographs now. Please separate yourself in taking any photographs now. No one in this hangar is allowed to take any selfie or individual photo. Please. It's an earnest request. We have come with some motive. We have to complete this mission today. Then only you can take as many photographs as you want to. Just put it in all your social medias. Enjoy all the congratulations. But right now, please be with us. Timekeeper and witnesses, please come and collect your forms. Timekeeper and witnesses. Don't open your packets now. Don't fiddle with your kids now. If you don't have anything inside it, we have ample spare stuff to hand over to you. Please do not touch your kid. Do not open, do not read, do not do anything. Finish your food and take little bit of mental rest. Keep your eyes closed. Give yourself a little rest.
अंकिता तुमको अटेंडेंस शीट दी है? हाँ। बोले जल्दी जल्दी आए। बच्चों को बोलना जल्दी जल्दी आए। जल्दी कर। अरे भगाओ बच्चों को। खाने के लिए देगा। Everyone has to wear. बस आईडी कार्ड पहनो।
पड़ेगा स्क्रीन पे Good morning, dear children. Did you all have a breakfast? And have you removed the boxes on top of your desk? Wonderful. My dear children, I know we are behind time only because of Bhopal, not for you. We all know that as per DM order, you cannot come to your school before 9:30. That is why you arrived in your schools at 9:30, and thereafter you have come to this place known as Manit in Bhopal, and today you are going to be part of a very big mega event which happens once a year in IISF. In this year's IISF, you all have come together to assemble robot kits. These robot kits are placed in front of you, and I request you not to touch that because there are certain procedure. Before we start, I have a request to all those who are not connected to today's program to please leave the hanger. The students, if you have any seat empty beside you, make sure that you adjust another student there so that none of the seats are left vacant. I now request the steward group who are being asked to do a certain duty today to come and report in front of the dais. Once again, I repeat, I request the steward group who are 32 in number to please come and report in front of the dais. Guinness World Records adjudicator Shri Rishi Nath has already arrived, and he would like to brief the stewards about today's guideline. In addition to that, may I now request the two witness and the timekeeper also to come and report in front of the dais. We are very happy and privileged to have Shri Praveen Ramdas ji, the organizing secretary of Vigyan Bharati, Shri Prasad ji from West Bengal, organizing secretary, as well as Abga ji with us in this hangar. Sorry, Praveen ji. Praveen ji, Secretary, Vigyan Bharati, and Shri Prasad ji, Organizing Secretary, Vigyan Bharati is with us along with Abga. We have many more people associated with our Vigyan Bharati, associated with Ministry of Earth Science, associated with Ministry of Space. Many people are there, but I would be doing their introduction right on the dais. Right now, I only want stewards as well as the witness and the timekeeper to please report. We will be introducing to you
to you, to Rishinath. Sir, he is going to address you and give you guidelines about how you are going to work today with us. Timekeepers? Yes. Your witness. Another witness? Sir, both of you come here. Timekeeper? Shalendra? Okay, anyways. Why very few? 32 are there? Total 32 of you are there. Hurry up, hurry up. Young generation, run. मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिर्फ स्टूवर्ड्स को यहाँ रहने दीजिए सर. आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए, ये एक ग्रुप अलग रहेगा. Let's count ourselves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Exactly 32 of them. 50, group of 50. Each is going to be observed by one of them, right? We have 2 witnesses as desired in the guideline, and I'm just waiting for the timekeepers. Say hello to Rishi. This time I'm very happy to introduce the students who will be taking care as steward of in this program. So long we had been introducing only teachers, and somewhere I found my teachers were biased. This time I want my students to take a proper decision and qualify the ones who are able to do the operation as asked for and disqualify the one who are not able to. So over to Rishi. He shall be telling certain things to you all. Please listen to him very carefully. Good morning, everyone. My name is Rishi Nath. Hi. And I am an official adjudicator for Guinness World Records. So today, what are we here to adjudicate? The most number of people assembling robot kits. That's exactly what it is. So have you seen the kits, all of you? Okay. Now, do you know how it functions? Okay. So what you basically have to do is there'll be a time, which the timekeeper will keep the time for the start and the finish. Between this period, you'll have to just make sure that everyone is doing their own kit, not helping someone else. That's one. Secondly, also, they should not be moving around from their place. They should not leave the attempt area. You can see this is the attempt area, so they shouldn't leave this attempt area at all. Okay? And lastly, one thing is very important is you have to make sure that the kit functions properly. Okay? It has, I think, 4 functions, if I'm not mistaken, and all of the 4 will have to be, you'll have to observe that that functions properly. It's operational. That's pretty much all you have to do. Do you have any questions, any doubts? No? Okay. So, okay, these are the witness forms. He has 2 forms as well.
I hope you all are carrying a pen. Yes? No? You have not attended the meeting? किसके पास नहीं है? टीचर बन के आए वो बचपन में टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है क्या? लगा के जानी पड़ेगी। वेट वेट You come here, Yash. This is your group, so you have to vacate that you look after it. मैं कर रही हूँ नहीं हाँ पता है सेकेंड आप लोग आओ बच्चे जल्दी जल्दी रजीश जी अब आप अलॉट करिए 2 रो 25 की है यू आर इन चार्ज ऑफ दिस 25 and 25 50 students next come one of you go in the first line one of you go there yes very good go there you stay here this is total 50 these 2 rows she is your steward she is going to observe and check whether your work is properly done or not next come here wait don't make a mess wait move back sir yahan allotment ho gaya yash you go to your seat rajnish ji please come here one of you come here good these 2 rows come here these 2 rows move why this chair is empty we need to have a student here these 2 rows okay come these 2 rows come fast you're already here steward oh, move 2 rows come here these 2 rows next these 2 rows
राइट? आओ एक जाइए सर के साथ, एक इधर आइए, इधर एक इधर आओ, मूव, बस रेस्ट, गो विथ सर, मोर सीट, जाओ उधर, जाओ 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 जल्दी से। वो Rajneesh ji, are you taking over this responsibility? I am going there. This is an earnest request to all the students. Please don't open your kit. I again repeat, don't open your kit. Remove your tiffin packet and keep it below the table. I repeat, please don't touch the things kept on the table. Remove the food packet, keep it below, underneath the table. All the seats which are empty, I want to be filled up. Please send some students, some seats are empty here. Some seats are empty here. आप उन्होंने मना करा था, क्यों खोला उन्होंने? अब चले जाइए उधर, अभी नहीं, कुछ चेंज करिए. No one is supposed to open. Don't open anything. Table number 1, 2, ready. Table number 2, ready? Please don't disturb me. Table 3, you have 50 students. Why 2? He came that side, I don't know. Then there are other tables. Sir, ye check kar lijiye. You are there? Then there is here. Please. अब रहने दीजिए, वहाँ रहने दीजिए. Where are you? Who is assigned duty here? You. Count student. Count your student. Number your student. Give them numbers. Give your students number. Sir, बच्चों को भी disturb मत करिए. Give your students number. आप कहाँ हो? क्या ड्यूटी कर रहे हो? तो जाइए ना सर के. ओ, आप टाइम कीपर है. यू कम विद मी. बच्चों को नंबर अलॉट करके इनको खड़ा कर दिए, मैं जा रही हूँ. मैं जब बोलूँगी ना, one of the student has misplaced the RFID code. Please check if you have your cards or not. If anyone is missing, you can kindly collect from me. I just got one. If you are missing, you can collect from here. She is there. You keep it with you. तुषार जी, मुझे माफ कर दीजिएगा.
your cards, okay? Grab your GWR के उसमें क्या नाम है वॉलंटियर में ठीक है आईडी कार्ड होल्ड कर लो Yes. Team ready? You ready? The countdown has begun. Students from 13 different schools of Bhopal have almost arrived at Atmanirbhar Bhopal today. Slowly and gradually, they are all taking their places. They have been seated in a row of 25 students each. Each student is handed over a kit, which is known as AgriBot kit. They have a so-called customized field prepared in front of them, because finally their agri-robot has to work on the field. My earnest request to all the students is, you are today's hero. You are going to be the one who are representing your own country, IISF, for achieving, rather breaking a record set by Hong Kong in August 2019. And to do so, there are certain guidelines given to us. We all have to abide by that. So may I request you all to please act like disciplined student of your own respective school, because you are representing your own schools, like DPS, like Holy Family School, like other high schools. They are all reputed school of Bhopal. So this is our earnest request. We are waiting for the rest 400 students more to join us. Already 1,200 students are seated in this hall. This is the biggest hall every year which come up as the main hangar, and the year in where we create or break records. We are going to start in 10 minutes from now. I would like to inquire certain things from children. Whatever I will say, I will expect that you will just raise your hand, no talking, no shouting. Are you ready? I said raise your hand. Okay, put your hands down. We'll have some warm-up exercise now. Now, I want to know
whether you have got a packet which is having certain components of the agribot. You've got your packet? Good. Put your hands down. Did you get the frame? Lovely. I want the photographer to take the photos. They're looking so beautiful. Yes. Have you noticed a field, so-called customized field in front of you made by sand? हाथ उठ रहा है? Good. अब उस हाथ से थोड़ा सा सैंड को लेवल करो, थोड़ा सा सैंड को लेवल करो. अगर ज्यादा सैंड रहा तो आपका रॉबर्ट अटक जाएगा, वो चलेगा नहीं, गुस्सा दिखाएगा, उसको अच्छी तरह चलना है. You must have heard Rishinath saying there are 4 activities your robot is going to do, and we have to be successful with the maximum number. आस्ते से करो. आपके पास वहां पर एक नैपकिन रखा है, एक पानी की बोतल रखी है. ये सारी चीजें आपको इस एक्टिविटी के लिए लगेंगी. और जब आप पूरी एक्टिविटी खत्म करके जाओगे तो वहां एक पैकेट रखा है उस सैंड को घर ले जाने के लिए. हम ये सैंड छनवा के खरीद के आपके लिए लाए हैं. ये भोपाल की मिट्टी है और आप इसे अपने घर ले जाके अपने रॉबर्ट को डिस्प्ले कर सकोगे. सो इफ यू आर रेडी विद द फील्ड, raise your hands. I am not happy. I am not happy. I want pin drop silence. I am not happy if you shout. I am not happy if you say anything or clap hands. You have to work with action. Consider yourself that we cannot talk. Except me, I have to talk. Please maintain silence. I'll give you a brief idea about the program today. I start with the introduction of what is IISF, what is Guinness World Record, who are the organizations behind this IISF. Thereafter, we are going to tell you all about the special events happening today in our country. I will also talk to you all about what we are actually representing, and thereafter, I will then hand over the mic to Dr. Prashant Kudgare, my colleague from IIT Indore, who's going to take you all to the journey of Guinness World Record in IISF. That's a very nice thing to know, because with today's achievement, this journey will be added, and in next year, if we get the opportunity, the same can be produced to rest of the students joining us. After that, my dear children, we are going to have a wonderful lecture which will be delivered by none other than Professor Ghanti Murthy sir. He too is from IIT Indore. He is going to talk to you all about food habits, footprints, food mileage, and what is good for our health. Thereafter, we are going to have a proper introduction of our GWR adjudicator, who is from London, assigned the responsibility to adjudicate our event today. After that, we are going to have a small video display of today's assembling of the robot. Thereafter, my dear children, you will be asked to get ready, check your packet, and we are going to blow a whistle. The time decided to assemble this kit is 1 hour. I know you are too intelligent. You are belonging to classes 6 to 9, and you can do anything and everything, but do not try to do anything very fast. These are very small components. If you put pressure, it may break. If you just try to empty your packet on the table, your small components will fall, you may not get it.
So be very careful. Love your kit. And then you try to assemble it. I would like to give you 3 instructions. Number 1 is that the battery provided to you is of 9 volt. It has limited life. So don't try to play with it. If wheel is working, just check once and leave it. Don't try to check again and again. If your battery drain, I don't have 1600 batteries to give you again. The other most important thing I would like to tell you is, we are breaking a record set up by Hong Kong. So we have made it a mine. And in fact, that is the proof that today, whatever components you are using are all made in India. So it's still time for us to have things. And this is a specially customized kit. It's not available in that manner that we have tested and tried, taken care of it many times. So make sure that you assemble your kit very nicely. Love your kit, then assemble it. Say hello to your robot, then tell it, then make it walk. Is it okay? So I just want to know from Prashant sir, how much time do we have? I think around 1500 students have come in. So shall we start? Ready? Team is ready? Before I start, may I take this opportunity to welcome my coordinators who are coordinating in today's event. I would like to welcome Dr. Sudhir ji from ISRO, who is coordinating my event on the dais, please. Dr. Sudhir. Sudhir sir, where he is? May I request Dr. Jagveer ji from MOES to please come on the dais. May I request Dr. Vandana from MOES to come on the dais, please. May I request Prashant Kodgare. He is very much within you. Please give him a big round of applause. Prashant sir is there. May I request Professor Shailendra Singh ji to please come on the dais. Sudhir sir, आपको मैं ढूंढ रही हूँ. Good, good, good. We are the 6-member team who is looking after this event known as Guinness World Record. And with us, we have another team which are, the members of which are Shri Rajneesh Chaturvedi from Lucknow, Shri J.K. Pandit sir from Jharkhand, Shri Dwivedi ji from Jharkhand. We have Lima sir from Tezpur University. May I have these people? It will take a minute so that once if we are together, then we can work together again. Hurry up. Pandit sir, कहाँ गए आप? जल्दी से आइए. And we are adding more members in our team. May I have Tushar sir on the dais, please, for a minute. प्रशांत जी कहाँ चले गए? ठीक है सर. शैलेंद्र जी को दिखा दीजिए. See, this is all the team working behind, coming up with this kind of customized kit for you all. So are you ready to break the record? I'm very grateful for DPH Principal Ma'am who is here with us and the entire team from Vigyan Prasar, India Science Channel. We have with us members of 360 event group. I am just searching for Mohit ji, who has been a partner in crime with me for the last 2 years. Yes, Mohit ji. आ जाइए 1 मिनट, क्या होता है? So ये हमारी टीम है बच्चों. कभी हम आपकी तरह बेंचों में बैठते थे और अभी हम स्टेज में खड़े हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आज का कार्यक्रम किंतु आपके हाथ में है. You are the delegates of this program and you are going to give us what we want, what we are requesting from you. So are we ready? So say thank you to this team. Well done. God bless you all. चलिए हम स्टोर करते हैं. Sir, I'm starting now. We were just killing the time actually. So somehow, have to keep them engaged.
IISF जब हम स्टार्ट करेंगे मैं एक बार विसिल ब्लो करके सुना रही हूं कैसी आवाज मिलेगी आपको. करूं? छूना मत, कुछ भी नहीं छूना, सिर्फ विसिल सुन लो. और मैं नहीं, मेरे अंदर दम ही नहीं है बजाने का. मैं तो टाइम कीपर से रिक्वेस्ट करूंगी बजाने के लिए. सर थोड़ा जोर से सुनाइए इनको कैसी बजेगी. इतना नहीं, कंटिन्यू थोड़ी देर तक सुन रहे हैं सब लोग. लास्ट चाइल्ड नहीं आ रहा है, एक बार और माइक में करिए. एक साथ आइए दोनों. सुनाई दे रहा है? पीछे नहीं आ रहा है. कोई पीछे भागिए कोई. देखिए मैं, ये पिछली बार मिस हुआ था मेरा. They could not hear in the end. Actually this happened last time that our last children could not hear. So that's why I'm just testing everything. हेलो, मुझे लगता है मेरे लिए माइक ठीक है. इन्हें हटा दो. Are we ready? Dear participants, are we ready? आवाज नहीं आनी है. सुनाई नहीं दे रहा है इन लोगों को. मैंने कहा आवाज नहीं चाहिए मुझे, हाथ चाहिए. सब लोग का हाथ. Now those who are stewards, please stand in a proper queue and line. We are going to start the program. All stewards, please stand beside your groups. All of you stand in proper line. All of you. If the last child is entered, I would be requesting the gatekeepers to please close the gate if we start the program. Now, all together, all of you are going to raise the hand. That is the announcement that we are starting the program. Namaste. Good morning. Happy morning to all my young budding scientists, the VVIPs of today, who have joined us from around 13 schools of Bhopal. Hello viewers, well-wishers, students, faculty members, and my esteemed guests. Our Vibha Karyakartas, all the members of the different ministries who have joined as nodal agencies to be part of this IISF Bhopal happening in Manet, Bhopal. The program started on the 21st of January and it's going to conclude with a very big valedictory session tomorrow. We got the opportunity to hold Guinness World Record today, and today is a very, very important day. We all know that the nation is observing Prakram Divas, known for Netaji. Our Prime Minister is actually virtually naming around 21 islands which had no names to celebrate the 126th birth anniversary of Netaji Subhash. It's a very unique date, 23rd January 2023. And I think this is going to be there in the record book of Guinness Book, wherein already we have our name established. We have around 14 records already in the book of records,
whose 67th edition is already on the shelf. I am Dr. Mayuri Dutt. I've come all the way from Kolkata. It's been my long journey with IISF, and this is going to be my 13th record if you help me in achieving, rather breaking it. Altogether, the IISF journey has around 15 records in its bag. They are very exciting records. And my colleague, Dr. Prashant Kodgore, is going to give you a view about it very soon. My dear children, in today's program, we have all come together to assemble a robot. The journey for making this robot is not very long, but not very short. It took almost 4 months for us to develop such a robot and get it approved by Guinness World Record officials in London. So it's really a great journey. But if I talk about the journey of IISF, it started in 2015 at IIT Delhi. Then in 16, it was in NPL Delhi. 17, it went to Madras and was actually held in IIT Madras. In 2018, it went to Lucknow and was held in IGP. 2019, Kolkata got the opportunity to host it in Science City Auditorium, as well as in Science City Vishya Bangla Convention Center in 2019. 2020 became really very tough for us to hold IISF. But the organization thought, and came up with the idea to hold it in the virtual platform. The entire world was talking about pandemic, but IISF team actually worked hard, and they hosted this program on a virtual platform. That is when we came to know that IISF has its already placed, it's cemented rather their foot. There were around 147 visitors who visited online to view this particular India International Science Festival and made India International Science Festival creating a Guinness World Record. And that's a huge achievement for IISF team. In addition to that, we are very happy to say that we could achieve 5 world records with more than 40,000 students. There were around 10,000 students in each program. Then we went towards Goa, and in last year, December, IISF was held in Goa. NCPOS was the nodal agency who took care of everything in Goa under Ministry of Art Science. This program was held in hybrid mode, and we are very happy to announce that we achieved 3 records, and there was a hat-trick of hat-trick. More than 10,000 scientists are already here in the campus and enjoying various programs being held in IISF. There are around 15 programs, and Guinness World Record is one of them. Guinness World Record always welcome the youngest participants in the form of delegates, and you are the one who are today's delegates of Guinness World Record. We all know that the Prime Minister has said science is like that energy in the development of 21st century India, which has a power to accelerate the development of every region, the development of every state. There is no caste, no creed, no age, no time for getting achievement where science is concerned. So my dear children, we are here not to only make you know all about robots or assembling of the robots, but we are here to tell you all about the International Year of Millets. Do you know what is millets?
It's such a wonderful cereal which you would like to have once you know what are the nutrition value of millets. Millets are cultivated in low fertile land mountains, tribal and rain-fed areas. These areas include Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, and Telangana. In the pre-green revolution era, in 1965 and 66, millets were cultivated in 36.90 million hectares of land. In 2016 and 17, the area under millet cultivated declined to 14.72 million hectares, that is 60% less, due to change in consumption pattern, dietary habits, unavailability of millets, low yields, less demand, and conversion of irrigated lands of cultivation of rice and wheat. As a result of this, nutrients like protein, vitamin A, iron, and iodine level fell in women and children. Production of millet will definitely help in providing nutritional value, especially to the poor. Besides providing multinational security, it also helps in preventing malnutrition. In 2018, it was declared a National Year of Millet by India, and in 2023, it's now been an International Year of Millet. We should know what are millets, and I just came across. I would like to share, because I told you that I don't want you all to answer me back or talk to me. So let me tell you all about millets. If you see in your right and in your left, you can see some posters very nicely placed talking to you all about jowar, bajra, ragi, little millet, includes kutku, kudu, sawa, kangri, and china. So if you are interested to know more about millets, please have a view to your right as well as to your left. We know that millets are tolerant to drought or photosensitive and are resistant to climate change. The cultivation of millets requires less water than the cultivation of rice and wheat. This is very new to all of you probably. Maybe you have not heard from your parents, but I will just give you an idea. When we go to the market and buy wheat, we always go for 5 cereal wheat. So that is the 5 cereals all mixed up and they give nutrition value. So after me, when we will have Professor Ganti Murthy sir, he is going to talk about the nutrition value of millets. Dear children, we all have assembled for Guinness World Record. Yes? Hands up. Good. So now my children are disciplined. Do you know the original story of Guinness World Record? I don't think so. Many of us also never knew. When I joined Guinness, I also thought Guinness is Guinness Book of World Record. Exactly, it is not. The original story of Guinness Book of World Record is like that. Kindly listen. I request the volunteers who are walking in the aisle to please be stationed at one place. Be stationed at one place. Guinness World Records, originally the Guinness Book of World Records, the ultimate authority on record-breaking achievements, started out as an idea for a book of facts to solve arguments in pubs. The idea came about in the early 1950s when Sir Hugh Brewer, 1890, managing director of the Guinness Brewery, attended a shooting party in country Wexford. There, he and his host argued about the fastest game bird in Europe and failed to find an answer in any reference book.
In 1954, recalling his shooting party argument, Sir Hugh had the idea for a Guinness promotion. Based on the idea of setting pub arguments, invited twins Norris and Ross, who were fact-finding researchers from Fleet Street, to compile a book of facts and figures. Guinness superlatives were incorporated on 30th November, and the office opened in 2 rooms in a converted gymnasium on the top floor of Ludgate House, 107 Fleet Street. After an initial research phase, work began on writing the book, which took 90 hours a week, including weekends and bank holidays. Little did the Mac writers know that taking shape was a book that would go on to become an all-time bestseller and one of the most recognized and trusted band in the world. Although workbooks never did tackle this original question, owing to their focus purely in world records, the red-breasted merganizer would be the most likely answer. It is fully migratory and still occasionally hunted. So the power of recording, breaking the record and creating record is a great story behind it. Today, Guinness World Record is a global brand with offices in London, New York, Beijing, Tokyo, and Dubai, with brand ambassadors and adjudicators. There are more than 70 adjudicators, and we are very privileged to have one among them as Rishi Nath. So, as we are all set, and my required number of children, that is around 1,600, has already assembled in this hangar, we will now take the privilege to have Dr. Prashant Kudgare on the dais to give you a small view about the journey of Guinness World Record only after the introduction of the with the AV of Science India Festival 2022. विज्ञान जिससे बदल रहे हैं आयाम उन उम्मीदों के जिन्हें कभी केवल सपनों में देखा था। विज्ञान जिससे खुल रहे हैं वो रास्ते उन राहों के जहां एक नया भारत आत्मनिर्भरता का चोला ओढ़े खड़ा है। विज्ञान जिससे अनुसंधान समाधान बना रहा है और तकनीक उसे अमल में ला विकसित भारत का निर्माण कर रही है। उसी विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के साथ भारत बढ़ रहा है अमृत काल की ओर एक बड़े संकल्प के साथ। हर क्षेत्र में विकसित भारत की सिद्धि के लिए भारत आज समावेशी विकास, सतत प्रयास और तकनीक व अनुसंधान से विश्व रैंकिंग में प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या में, SCI जर्नल्स में भारतीय वैज्ञानिकों के प्रकाशन की संख्या में, साथ ही विज्ञान और इंजीनियरिंग में PhDs की संख्या में भी तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंक 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर 2022 में 40वें स्थान पर पहुंच गई है। और ये परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व और दूरदर्शिता का। 2014 के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट में भी काफी वृद्धि की गई। सरकार के प्रयासों से आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में
46वें स्थान पर है, 46। जबकि 2015 में भारत 81 नंबर पर था, 81। इतने कम समय में हम 81 से 46 तक आए हैं। आज की युवा पीढ़ी के डीएनए में ही साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, उसके प्रति रुझान है। वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है। हमें इस युवा पीढ़ी को पूरी शक्ति से सपोर्ट करना है। साथियों, भारत का रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम दुनिया में श्रेष्ठ हो, अमृत काल में हमें इसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ जुटना है। PSLV C-37 द्वारा एक साथ अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक पहुंचाना हो, या डीप ओशन मिशन के अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था को समुद्र के रिसोर्सेज से बढ़ावा देना, डिजिटल भारत के अंतर्गत हर जन सुविधा को एक टच के माध्यम से पहुंचाना हो, या ऊर्जा के क्षेत्र में कई ऐसे सतत बदलाव लाना जिनसे आने वाले समय में ऊर्जा सुरक्षा और भी मजबूत होगी और पर्यावरण पर बढ़ता बोझ भी कम होगा। सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना हो, या अनुसंधान पर आधारित नए इनोवेटिव आइडियाज को सपोर्ट कर स्टार्टअप्स को बढ़ने का मौका देना, या भारत को विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति बनाते चुनाव आयोग के लिए 20 लाख से अधिक उपकरणों का वितरण करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करते हुए सतत प्रयासों के तहत वेस्ट से वेल्थ का निर्माण करना हो, या विश्व के 90 से अधिक देशों को कोविड महामारी के दौरान भारत में बनी वैक्सीन्स और कई और दवाइयों का समर्थन देना हो। सदी के सबसे मुश्किल दौर में भी भारत ने पथ प्रदर्शक बन न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया का साथ दिया, उनका मार्गदर्शन किया। भारत को आज पूरी दुनिया तकनीक व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम्मान की नजर से देखती है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल उत्सव है, उन्हीं उपलब्धियों को पहचान देने का महोत्सव है। आने वाले कल को उज्जवल बनाते इनोवेशंस को सम्मान देने का जश्न है। युवा पीढ़ी के जोश को विज्ञान का आधार देने का, पिछले 75 वर्षों से प्रोत्साहन लेते हुए भारत की ख्याति में नए अध्याय लिखने का और पूरे विश्व की प्रगति में भारत के योगदान को अभूतपूर्व बनाने का। अभी तो एनर्जी आनी है. Did you like it? How nice. So we have to say thanks to Mohit and his team, right? Okay. Now, slowly and gradually, we are moving towards what for we have come. So may I now request Prashant ji, if you are ready. Are you ready, Prashant ji? Yes? Okay. Hello. Namaste. I'm sure all of you had breakfast. I don't think so. Namaste. How are you? Thank you very much for joining us here for India International Science Festival 2022. Earlier this event was supposed to be there in December, but it got postponed. Now, by now, you know what is IISF? What is IISF? Very good. This journey started in 2015, and this is the 8th edition. Every year, whenever we have IISF, we used to conduct programs for different age groups. There are programs for researchers, scientists, PhD students,
and also for college kids. And most important is the young generation which is sitting in front of me, isn't it? So these budding scientists, they come every year to make or break a world record. So do you know how many world records were made or broken earlier? Can anybody tell that in the previous versions? How many world records were broken or made? Okay, so let's go through briefly this journey about what kind of records were made earlier. This slide this year's IISF is extremely special for us. And the reason for that is, this is a year where we are going to get the presidency of G20. Whole world is watching towards us. And if whole world is watching towards us, why not create a world record? And that's the reason that this IISF and this Guinness World Record is special for us. Other than that, we are celebrating Swatantrata Ka Amrit Mahotsav and we are marching towards Amrit Kaal. And therefore, it will be interesting to go through this journey. This slide tells you that what kind of different records were conducted starting from 2015 till last one which happened in Goa in 2021. The first one which happened in IIT Delhi, there a largest practical science lesson was conducted and 2000 plus students, they participated and made a world record. Subsequently, in 2017, in IIT Madras, there was yet another record by largest biology lesson. That was made in 2017 and 1000 plus students, bright students like you, who were there to make that record. Subsequently, when IISF was held in 2018, 550 students, they did an experiment, just not lesson. I know all of you love to do activity, isn't it? So these students, they came together and isolated DNA, and most people conducting a DNA isolation experiment, that was a world record made in Lucknow. Lucknow, another world record was made, that was largest first aid lesson with 3,500 plus students, a huge hall, huge auditorium. That was yet another world record. And the subsequent year, IISF went to the eastern part of India. It was there in Kolkata where 3 world records were made. First one was the largest astrophysics lesson. Then we had another world record of most people assembling radio kit. How many of you know C.V. Raman? Yes? So this award was to commemorate his contribution and to commemorate contribution of J.C. Bose, who developed radio waves. Yes? So subsequently in Kolkata, third world record of Kolkata was to make largest human image of human chromosomes. And for this, we had 400 plus students who were there in Kolkata, who were wearing different color clothes, and they could make a huge image of human replica. Then it was a year of pandemic. All of us, we were locked in our house. We were not able to go to school. But that didn't stop of having this mega event. That event was conducted online, and we were operating it from Delhi. And despite pandemic, we were able to make 5 world record in 2020. First one was to make most people assembling sundial. I hope all of you have gone to Jantar Mantar and you know what is sundial. So 100 plus different cities across India in almost every state, they were given kits, commercial kits, and they developed it, and 1600 plus students, they made that sundial simultaneously. Subsequently, because it was a pandemic year, 2 records were there related to hygiene. One was related to wearing protecting masks, and another was related to washing their hands. All these 3 events were there online, and the 4th one was related to nutrition. 2 scientists from Harvard Medical School, they gave a lecture. हमें पता है हम जो खाते हैं उसी से अपना शरीर बनता है.
और अपनी जीवन रक्षा प्रणाली और अपना खाना उनका बहुत अच्छे से तालमेल है। इसलिए हम क्या खाते हैं, सही मात्रा में खाते हैं क्या और सही चीज खाते हैं क्या, उसकी जानकारी देने के लिए 2-2.5 हजार से ज्यादा बच्चों का एक कार्यक्रम हुआ। 2700 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए। और IISF ये ऑनलाइन इवेंट, that itself is a world record. So largest attendance for a virtual science conference. So IISF itself is a world record where 45,000 plus participants, they came together virtually in 35 different sessions, and that itself is a world record. And last year when we were there in Goa, we continued this journey of online and offline, a hybrid event. And in this hybrid event, almost 1,000 students from Goa and 1,700 plus students from different part of India simultaneously on 2 different platforms. They created a kit which is able to harvest rainwater and as well as purify that rainwater. So to give a message about conservation of water, this world record was made. Subsequently, on another day, there was the largest space exploration lesson followed by assembly of a radio antenna kit. You know that government of India has so many different labs, and there is one lab near Pune and Nasik where there is array of radio antenna dish. Anyone is interested to talk to aliens which are there outside? How are you going to talk? Isn't it? You need some way of communicating, and that's why these replica dishes were made. And the most exciting event, which I feel and I am most attached to it, is assembly of model rocket kit. How many of you know Chandrayaan, Mangalyaan? And there is yet another program which is coming up, that is Gaganyaan. The Gaganyaan is the one program where ISRO will send Indian astronaut will go in space. Maybe one of you could also go. The vehicle which goes there with a human, that is called as human rated launch vehicle. So in collaboration with ISRO, Sudhirji is here with us. With his help and his mentoring, we were able to assemble 500 plus rockets. Bright students like you from Goa, they came and they just not assembled, they launched all these rockets in the skies of Goa. So in December there was yet another Diwali and 500 rockets were launched there. And this journey is now continued here in the heart of India. भारत का दिल मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के होनहार बच्चे मेरे सामने खड़े हैं। क्या है हम ये जर्नी को कंटिन्यू करेंगे? कौन तैयार है? Are we ready? So this year we are going to have an official attempt of most people assembling robots simultaneously. The reason of choosing agri robot is that we want to give a message. हमारे जो किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, सरकार चाहती है, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनकी आय बढ़े। अगर वही चीज वो बार बार करते रहेंगे, आय कैसे बढ़ेगी? हमारा दायित्व बनता है, हम जो वैज्ञानिक हैं, हम जो साइंस करने वाले लोग हैं, इनको अपने रूटीन काम से बाहर आके किसानों के लिए कुछ करना पड़ेगा। जब तक साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन किसान के लिए काम नहीं करेंगे, उनकी आय नहीं बढ़ेगी। और जैसे मैडम ने बताया कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के ये रोबोट जो है हमारे यहाँ बच्चे यहाँ बनाएंगे। मैडम ने जैसा बताया कि इससे पहले रोबोट असेंबली का रिकॉर्ड हांगकांग, चाइना से है। क्या आप वो रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए तैयार है? आवाज नहीं आ रही है। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? थैंक यू वेरी मच। प्रॉब्लम है। सबको ज्यादा जोश आया कि नहीं? हमारे पोस्टर में आप लोग की फोटो छपेगी कि नहीं?
आएगी ना? जरूर आएगी, राइट? सो अभी हम प्रोफेसर घंटी मूर्ति की तरफ से थोड़ी सी और नॉलेज गेन करेंगे इस कार्यक्रम के विषय में. I will be inviting Professor Prashant Kodgore to please introduce Professor Gantimurthy sir on the dais for his lecture now. Please give a big round of applause for Professor Gantimurthy sir. Pleasure. It's a great pleasure and honor to introduce my good friend and colleague, Professor Ganti S. Murthy. Professor Murthy got his master's degree in agricultural engineering, most appropriate degree for today's event, isn't it? From IIT Kharagpur. Subsequently, he moved to US and did his PhD from University of Illinois at Urbana-Champaign, and for his postdoctoral studies at Portland State University in Oregon. He became a professor there, and after a few years of service in USA, he came back to India in IIT Indore. He's a professor there. Along with his responsibilities at IIT Indore, he's also convener of भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक सेल है, उसके नेशनल कन्वेनर है. प्रोफेसर मूर्ति विद्यार्थी विज्ञान मंथन के स्टूडेंट एंगेजमेंट कमेटी के कन्वेनर भी है. आप में से कितने बच्चों ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन की एग्जाम दी थी? कुछ बच्चों ने दी थी. तो आप अगर नेशनल कैंप में विनर बनेंगे, हिमालयन बनेंगे, तो एक स्टूडेंट एंगेजमेंट कमेटी आपकी मेंटरिंग करेंगी. उसके कन्वेनर डॉक्टर मूर्ति है. डॉक्टर मूर्ति, उनका रिसर्च जो है वो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग पे है. वो आज यहाँ दोपहर में रहेंगे. लेक्चर के बाद और अपने अटेम्प्ट के बाद आपको अगर कुछ पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं. मैं प्रोफेसर मूर्ति को आमंत्रित करता हूँ ब्रीफली ये आज टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिजिलेंट एग्रीकल्चर के ऊपर हमारे साथ थोड़ा सा संवाद करेंगे. प्रोफेसर मूर्ति. धन्यवाद प्रशांत जी. प्रशांत जी, स्लाइड चेंज. नमस्ते एवरीवन. हाउ आर यू? गुड. ओके. अभी आपने सुना था, यू हैड जस्ट हर्ड Dr. Mayuri Dutt ji talk about millets, right? And you have seen millets all across you. These are some of the millets you will see. Ragi, bajra, jowar. कितने लोगों ने बाजरा की रोटी खाई है? अरे सही, बहुत अच्छा. अच्छी लगती है? You know, वो सिर्फ अच्छी नहीं लगती, वो हेल्थ के लिए भी अच्छी है. उससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है, ब्लड शुगर नहीं कम होता है, और नींद अच्छी आती है, प्रोटीन भी ज़्यादा रहता है. ऐसे बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं मिलेट्स के. ठीक है. तो ये मिलेट्स जो है सबसे पुरानी, हम लोग आदिमानव से आए हैं ना. हम लोग कहाँ से आए? ह्यूमन एवोल्यूशन कहाँ से हुआ था? पहले आदिमानव थे, उन लोगों ने कुछ कुछ खेती सीखा. आप लोग जानते हैं ना, ये सब तो पढ़ा है. पहले खेती सीखा था, फिर उसके बाद आप जानते हैं कौन सी, तो जो हम लोग जब करते हैं तो खेती और जो ट्रेड है, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. इनफैक्ट कोई भी देश अगर प्रॉस्पेरस होता है तो एग्रीकल्चर और ट्रेड के लिए होता है. तो आप लोग यहीं पे भीमबेटका कितने लोग गए हैं? और ये क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, एग्जैक्टली. ये पेंटिंग्स है, केव पेंटिंग्स है, वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स. व्हाट डू दीज थिंग्स शो? ये क्या दिखाते हैं? हमारे जो 1,00,000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, 35,000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, ये सब दिखाता है. यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया और उन्होंने एक्सकवेशंस के बाद उन्होंने पता किया कि एग्रीकल्चर जो है, खेती जो है, हमने एटलीस्ट 10,000 साल पहले सीखा था इंडिया में. और सबसे पहले हमने कौन कौन से क्रॉप सीखा था करना, खेती करना? गेहूं और बाजरा. उसके बाद ये सब सीखा था हमने. और जो कपड़े पहनने के लिए जो कॉटन होता है वो भी हमने बाद में सीखा. उसके बाद हमने चावल सीखा. सबसे लास्ट में चावल को कैसे खेती करते हैं ये सीखा.
तो आप समझ रहे हैं, ये सब मिलेट्स जो है, सबसे पहले खेती करना हमने मिलेट्स को खेती करना सीखा था। उसके बाद गेहूं, तुअर दाल, चावल, ये सब बाद में आए। तो अगर ये सब करते हैं तो इंडिया में आप लोग साइंस के टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, है ना, सब लोग पढ़ते हैं। तो भारत में, दुनिया में सबसे पहले एग्रीकल्चर का टेक्स्ट बुक कहां लिखा गया था? हमारे देश में लिखा गया था। कब लिखा गया था? कृषि पराशरा करके 2500 साल पहले लिखा गया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट एग्रीकल्चर टेक्स्ट बुक। उसके बाद से बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स आते रहे हैं। और आप लोगों ने दारा सिखो का नाम सुना है? दारा सिखो कौन था? औरंगजेब का भाई था। उन्होंने भी एक बुक लिखा है, नुस्खा दर फन्नी फलाहत करके, 17वीं सेंचुरी में। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। तो लेकिन ये देखो, हमारे देश कभी भी, हमारा देश का आज का पॉपुलेशन कितना है? 1.346 बिलियन, 1.34 बिलियन के आसपास है। एंड यू नो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? और 134 करोड़ है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस? 33 करोड़। 33 करोड़ से 134 बिलियन, 134 करोड़ हो गया है 75 ईयर्स में। एंड यू नो व्हाट दैट मीन्स? कितने लोग हो गए अभी? 4 times people, that means more food. And India has produced that much food. तो क्या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने किया था उसके लिए? Have you heard of Green Revolution? So we had Green Revolution, which actually made it possible for us to provide food for everybody. But you know, it was not always like this. Earlier we were dependent on food from outside countries. Now, but the Green Revolution has also costs. What are the costs of Green Revolution? We damaged our soil. We damaged our water. Water pollution हो गया है। ये सब को अगर, if we want to, overuse of pesticides, overuse of fertilizers, all of these have caused a lot of problems now. Now it is up to you all to find innovative solutions to address these challenges. How will you do that? So, what are the steps in agriculture? कितने लोगों ने पेड़ उगाए हैं, पौधे उगाए हैं, गार्डनिंग किया है? हाँ, तो पहले क्या करते हैं आप? प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसमें बीज बोते हैं, उसको फिर पानी देते हैं, है ना, पानी डालते हैं ना आप। उसके बाद अगर कोई वीड जाता है तो उसको क्या करते हैं आप? निकाल देते हैं। और फिर जब पौधा उग जाता है तो काट के स्टोर करते हैं, है ना। यही सब स्टेप्स है। तो आज आप लोग रोबोटिक्स के ऊपर काम करने वाले हो। यू आर ऑल गोइंग टू वर्क ऑन रोबोटिक्स, सम काइंड ऑफ ए रोबोट, ड्रोन्स, राइट? ये सुना है ना? Which of these steps do you think you can use robots? Which steps? Sowing, sowing कितने लोग बोलते हैं sowing कर सकते हैं रोबोट से? हाँ, कितने लोग बोलते हैं we can seed? Sowing किया, उसके बाद हमने plowing किया, plowing करना है, उसके बाद पानी डालना है, irrigation करना है, yes. So उसके बाद weeding करना है, जाके रोबोट निकाल सकता है इसे? Actually, you know, और उसका हार्वेस्टिंग करना है। All of these steps can be done by robots and drones. You can use robots and drones in all of these. And you can use a lot of artificial intelligence. Yeah. So, एक example देता हूं। अगर आपको पानी डालना है, तो क्या करोगे? पहले देखोगे मिट्टी में, है ना? If there is enough water for the plant, then you will say whether there is कितना पानी चाहिए प्लांट को। Then you will say, okay, अगले 2 दिन में am I going to get rain or not, right? Then you will say, okay, how much water do I need to add? You will add that water, and then that's it. So this is the kind of a small project that you can do in your home. इसको आपने Arduino का नाम सुना है, microcontrollers? You can use that for this one. But if you want to use it in a big field, बड़े बड़े खेत में करना चाहते हो, ये छोटा है, इससे काम नहीं चलेगा, इससे चलेगा। ये रोबोट्स बना सकते हो जो जाकर देखेगा कि
किस पेड़ को कितना पानी चाहिए, और फिर उसके बाद आप कर सकते हो। ये एक्चुअल खेत में जो रोबोट्स हैं ये हैं वो, ठीक है। और अगर आपको वीडिंग करना है, जो अननेसेसरी प्लांट्स आ रहे हैं उसको निकालना है, तो क्या करोगे? पहले एक रोबोट जाएगा, देखेगा, है ना, कि ये प्लांट है या वीड है। वीड है तो क्या करेगा? निकाल देगा या हर्बिसाइड डालेगा, है ना। उसके बाद वो पूरा, लेकिन ये वीड है या प्लांट है कैसे पता करोगे? आर्ट या कंप्यूटर विजन से पता करोगे। कंप्यूटर विजन से बस पता चलता है कि इमेजेस क्या है, उसके ऊपर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा सकते हो, लगा के पता कर सकते हो कि ये पौधा है या वीड है, ठीक है। और ये एक रोबोट है जो खेत में जाकर प्लग करता है, वीड को देखकर निकाल देता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये वाला जब बड़े बड़े पेड़ होंगे, आम का बगीचा होगा ना, तो वो छोटा वाला तो काम नहीं करेगा, ये छोटा वाला तो काम नहीं करेगा। इस तरह के बड़े वाले वो भी यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स डालने के लिए भी। तो ये दूसरा वाला एक रोबोट है जो एप्पल को तोड़ता है, ये खेत में जाकर एप्पल को पिक करता है। आप लोग लीची कितने लोगों ने खाया है? लीची खाया, उसका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आज हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट फेस कर रहे हैं। आप लोगों में से कोई डिजाइन करेगा इसका? प्रॉब्लम क्या है? लीची बहुत ऊपर होता है और बहुत डेलिकेट होता है, उसको दबा के निकालेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। तो उसको आराम से तोड़ना है। उसको कैसे तोड़ेंगे ये टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है। आप लोगों में से कोई होगा डेवलप करेगा तो अच्छा रहेगा। लीची, ठीक है। उसके बाद आपका रोबोट है, हमने अभी बताया ना कि प्लोइंग कर सकता है, सीडिंग कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, वीडिंग कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। आपका रोबोट क्या करेगा आज? आपका रोबोट लैंड प्रिपरेशन करेगा, जो जोतने के बाद करते हैं ना वो करेगा, सीड प्लांटिंग करेगा और इरिगेशन करेगा, पानी डालेगा। ये 3 काम आपका रोबोट करेगा और खेत में मूव करेगा, 4 काम, ठीक है। तो आपका रोबोट इन रोबोट्स की तरह है लेकिन छोटा है। ये हम लोग आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, उसके बाद ये सब बड़े रोबोट्स पे आप लोग काम करो। हमको जब भी कोई काम करना होता है तो वी नीड टू डू समथिंग मीनिंगफुल। अभी आज डॉक्टर मयूरी दत्त जी ने और डॉक्टर प्रशांत कोटगिरी जी ने उन्होंने बताया था कि आज किसका जन्मदिन है? 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने क्या बोला था? उनका नारा क्या था? हाँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने तो हमको कुछ मीनिंगफुल काम करना है ना, तो लेट अस डू समथिंग बिग, ठीक है। लेट अस गो and make this attempt and be successful in establishing a Guinness World Record. मेरे साथ सब लोग बोलेंगे अगेन। ये नेताजी सुभाष चंद्र जी ने बोस ने हमको एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? एक और, जय हिंद, है ना। मेरे साथ आप बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नमस्ते। अगर हम नारा लगाते हैं जय हिंद का तो किसको याद करते हैं? बताओ तो। जय हिंद किसने कहा था? किसने? और आज क्या तारीख है? 23rd of January and today is the 126th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. Dear children, we've almost reached the time where I am going to ask my timekeeper to blow the whistle. Are you ready? बढ़िया है। चलो बच्चों, थोड़ी मेरी बातें ध्यान से सुनना। सुनोगे? बढ़िया है। Now, the next action of ours is, we want you to be quiet and see the video which we are going to show it to you, which talks about the process of assembling your agribot. The agribot is the name of your robot.
Okay? I'm seeing some students roaming around. Now, if you roam around and go to washroom, then you are going to miss the opportunity to be part of this event. Kindly be seated. This is my last call to all of you. Please take your seat. कोई नहीं निकलेगा बाहर. कोई नहीं निकलेगा बाहर. मैं चारों गेट के गार्ड्स को विनती करती हूं, अब जब वो हमारा कार्यक्रम शुरू होएगा तो उस गेट से किसी को निकलने नहीं दिया जाएगा, ना किसी को अंदर आने दिया जाएगा. जो लोग भी आइल में घूम रहे हैं, वो सारे लोग अगर स्टूवर्ड हैं तो अपनी डेस्क के सामने सेट हो जाए. Go report in front of your 50 students. All of you report in front of your 50 students. All the volunteers go back and stand there. I don't want to see anyone other than the 32 designated stewards as well as the camera and India Science team. Rest, everyone should move back. My organizing team is requested to be ready, because now when we start this program, thereafter we would request that we should maintain a pin drop silence. I repeat, it will be a pin drop silence. जय, सारे वॉलंटियर्स को पीछे की रो में आप बिठा दीजिए, कुछ सीटें वहां खाली हैं. अब हम नहीं चाहते कि इस एरिया में कोई भी चलना फिरना करे. जब हम वीडियो बच्चों को दिखाएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे बच्चों को कि वो वीडियो के मुताबिक अपने कंपोनेंट्स को चेक कर ले, क्योंकि जब विसिल ब्लो कर जाएगी उसके बाद आप कोई कंपोनेंट चेंज नहीं करना. अगर कोई टूट जाता है वो मिल जाएगा, बट बिना ट्राई करके मांगना नहीं. आप लोग 1600 बच्चे हो और हमारे पास 100 एक्स्ट्रा किट है, तो करीब 100 बच्चों की चीज हम दे पाएंगे. इज इट क्लियर? सो माय स्टूवर्ड्स आर रेडी विद योर पेन पेपर. डन? You know your children? I request the IT team to please start the video. So let's explore the AgriBot. In the kit you will find two things, one chases and one full packet. Now we'll explore the things what we need. So one frame is there. Next we have a manual. Don't touch your kids. Then you can watch the manual. Two BO wheels. Don't bring anything out of your kit. Two foam wheels. One wooden axle. You can touch only the manual. Nothing else. 3 seed containers. One 9-volt battery. One BO motor. 3 rubber rings. 2 rubber bands. One bottle. One battery snapper, one packet of seed, and one double-side tape. We will slowly open the frame and extract 11 parts as shown. We also have a manual so that all the instructions are written in the manual. Slowly we will read each and every step and then do the things. So we are segregating the frame. Totally 11 parts we are going to segregate. Open the frame slowly so that the above paper doesn't come out.
carefully. Do not touch your kit yet. We cannot start assembly now. Don't touch your kit's components. Keep it down. We are having 11 parts. We'll just take it all aside. Now, we are going to prepare the setup of the motor. We'll take the BO motor, connect the BO wheels with the BO motor. Do not fix the wheel forcefully. Match the shape of the hole of the wheel with the edge of the shaft in the motor. So you should not struggle with that. Next, we'll take the battery snapper. The battery snappers are already sleeved, so you will have tip, and if you don't have, there will be cuts, so you can peel it off. Next, we will connect the battery snapper with the rings on the BO motor. So twist it properly so that we can connect it on the rings of the wheel. So there are 2 rings, we'll connect it on them and twist it. Make sure that the twisted red and black wire do not touch each other. Now we will check the polarity, whether the wheels are moving forward or not. So we'll just connect a 9-volt battery with the snapper and check. You can see here that the wheels are moving backwards. So we'll just turn the complete setup upside down, and now we'll check again. So you can see and observe that the wheels are now moving forward. This position of the setup we are not going to change at all. Make sure that the battery is not used again and again, as the battery will get exhaust soon. Now we'll take this part and connect it with the setup 1. We are not changing the position of the motor, you can see, as we have already observed that it is moving forward. Now again the small part on which the motor is written, we'll connect that. So our setup is ready now. But again, we will not change the position of the setup. We'll keep it like that. Now we'll prepare the next setup. Take the 3 containers and fill the seed in these containers equally. Now we'll close the containers and again close it with the help of rubber rings. You will find there are holes on the containers, so these holes we will completely close with the rubber ring. So all the holes in the container are closed so that the seed doesn't fall. Now we'll take the wooden axle and fix it on the bottom of the containers.
setup 2 is ready. Now we'll take the big foam part and connect with setup 1 and setup 2. Make sure that the containers are on the top of the axle. We'll fix the wheels, foam wheels, to the axle. One wheel, then we'll fix the second part. And the second foam wheel. Now we'll fix the two parts on the back side of the bot. This is the first part. Second part is on the downside. Now we'll fix the frame part where agribot is written. Fix the plowing frame part above the previous step as shown. So this is the plowing part. We'll fix just upon the same where we have fixed the agribot part. Now we'll fill the bottle with the water. Make sure that you again put the cap, otherwise the water will fall down. Tie the bottle with the rubber band on the upper part at the back of the bot as shown. Now we'll paste a double side tape on the cut and fix the battery on it. So you can see there is a cut where we are going to fix the double side tape. We'll take out the cover of the battery and fix the battery on that. Now we'll lock the entire setup with one more part so that the battery doesn't comes out. So once our entire setup is ready, now we'll just check, we'll connect the battery snapper with the battery and once again check where the bot is moving. So the bot is moving forward.
Okay. Now, we'll connect the front parts. Slowly shift the rings so that the holes are open. Do not remove the rings completely from the wooden axle. Just need to slowly remove the rings from the holes so that the outlet for the seed is open. All the 3 containers slowly will remove the rings. We'll make sure that the complete setup is kept. Setup 2 is kept properly. Now our entire setup is ready. We just need to connect the batteries and open the cap of the bottle so that when the complete agripot moves, the seeds fall, water starts pouring, and the plowing makes way on the field. So we have opened the cap and now connect the battery. Now our entire setup is ready. We'll just connect the battery and the batteries. The complete agripot starts. Thank you. Are you ready to assemble this? So now, let's start the main feature of this program. And this can only be done after the guidelines is delivered to you by none other than Rishi Nath. Rishi Nath is an account manager at Guinness World Record. Rishi is from Kolkata. He had been part of GWR event and at Goa as well, wherein he had taken a decision of approving the number when our children had assembled 550 rockets and have launched them. There were around 538 successful launch. And there is where Rishi was really impressed by the organizers like Vigyan Bharati, MOES, and State of Goa. Here in Bhopal, our organizers are Vigyan Bharati, RCB, DBT, Government of India, and Government of Madhya Pradesh. If I talk about Rishi, Rishi is part of the 70-member contingent team who travels all across the world adjudicating the Guinness World Record. May I now request all my children to give a big round of applause and welcome Rishi on the dais, please. Dear children, Rishi is going to see the kit for the first time here on the dais. But before that, he's really very impressed after seeing the video as how it will be assembled. And the first thing he said to me, it's very difficult. It's very difficult. Is it difficult? Not at all. Say, no, not at all. They are ready, Rishi. You need not have to worry. If 1,600 of them are participating, assembling together, I think, if not 100%, I think we will have more than 1,500 students successfully assembling it and operating it
right under the nose of the respective stewards. So over to you. So this is the kit. Thank you, Mayuri. Thank you very much for your very, very kind words. Good afternoon, boys and girls. My name is Rishi Nath. I am the official adjudicator for Guinness World Records, headquartered in London. And today I will be adjudicating the record, the most people assembling robots simultaneously. To give you just a background and an idea, the current record stands at 279 and was achieved by Robot Institute of Hong Kong in China on August 2019. So that is the benchmark, 279. So do you think you will be able to beat this benchmark? Beat this record? Yes. Yeah, okay. All right. So without further ado, I'll just give you the brief guidelines. Most importantly, while the assembly is going on, do not leave your seats for whatever reason. Do not answer your phones if you have it. If you don't, well and good. The minimum time that you have to assemble the kits is 15. So 15 minutes is the minimum time that you have to be at assembly. Is that okay? However, for you, I think the time given is 1 hour, which is brilliant because it is a complex robot as far as I could see. But are you all confident about the robot? Are you all confident that you will be able to assemble the robot in 1 hour? Okay, so all the best to you. I'll just hand it over to Mayuri to flag start this. Did you hear what he said? 15 minutes, it has to be simultaneously. You're not to talk. And the other thing which Mayuri has added is they will not lend or borrow any components from each other, okay? So not lending anything, nor borrowing anything. 15 minutes after the whistle blows, you all have to minimum show that you are assembling this robot together, that is simultaneously. I again request people who are walking in the aisle, please now let the children concentrate because these 15 minutes of our initial stage will be more valuable, and then in the end, the last 15 minutes, because that is where we are going to see the function of the robot. Is that clear? 279 had been the last number. I would just like to ask Rishi, what do you expect? If it is 280, you are going to make us the record holder? Yes, we are. Did you hear that? But I am not going for my 280 target. My target is 1600, right? Yes. So we are going to do so, and I invite the two timekeepers. Are you ready? Be ready with your components, with your packet. Open your packet. Display your things. Display your things. Students, if any item is missing from your kit, you are not going to get up from your place. You are going to raise hand and our volunteer will come and help you to replace the damaged part. Nobody will get from their seats. Second important announcement for you is that after assembly is done, you again raise your hand and show to the steward that it is working properly. It is important that the steward watches the function of your assembled robot. Please keep in mind. And randomly, me and Rishi will be on round. We may ask you to show its operation too as well. So are you ready? Once again, I am requesting everyone, जिन लोग का वहाँ कार्य नहीं है, आप लोग थोड़ा बच्चों को अपने कार्य में ध्यान देने के लिए छोड़ दीजिए. सब लोग अपनी जगह पर चले जाइए. कैमरामैन, आप लोग अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, मगर वॉलंटियर्स आप लोग सब हट जाइए. Please don't walk around. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We will not talk with each other. If you need any help for missing part, please talk to your steward. This whole activity need to be done independently, and therefore we will not talk to anybody. Please have patience. Just raise your hand and steward will come and replace damaged part.
हाँ ये तेरे उसमें लगा होगा ये क्या ये लगा The BO wheels थोड़ा हार्ड है, अपने हथेली में पकड़ उसको दबाइए, अपने हथेली में उसका अपोजिट साइड रखो और जो आपका BO wheel है उसमें दो टाइप के पॉइंट हैं, उन्हें BO wheel के साथ टेक्निकल है, जब आप सेट करोगे उसे जोर से दबाओगे आपका व्हील्स अटैच हो जाएगा। Please do not get excited. You have full time. 1 घंटा जो का 17 मिनट में आपने वीडियो में देखा है वो आप 1 घंटे में करने जा रहे हैं। हमने 12:50 से शुरू करी है और 1:50 से हम खत्म करेंगे। ये साथ में जो 15-20 मिनट आप कार्य कर रहे हैं ये हमारा रिकॉर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, बट जब तक इसका ऑपरेशन सक्सेसफुली एज अ वर्कबल मॉडल हम नहीं दिखाएंगे तब तक ये अप्रूव नहीं होगा। We need to show its function successfully. Then only this record is going to be broken. You need to do one more thing, that concentrate on making it a workable model. बैटरी को बचा के रखो, उसको ड्रेन आउट मत करना। आप लोग का ध्यान बहुत ज़्यादा बैटरी में जा रहा है।
तो लेनी थी। वे मैं हूँ ये भैया तो तुम उधर भी चल ये इधर कर दो थोड़ा ये इधर कर अभी आके आता हूँ वापस करूँगा। भैया को शेयर मत यो नेक्स्ट ये प्लास्टिक का निकल गया। डबल साइड टेप अगर किसी बच्चे का नहीं यूज हो रहा है या नहीं मिल रहा है, यू कैन आस्क फॉर इट, वी हैव केप्ट स्पेयर।
function. तुम्हारे इधर जगह ही नहीं है यार अंदर आने की। हो गया तो यहाँ रखो। इसको हटाओ, ये खाने वाले कितने बोल रहे, हटाओ इसको। सर ये ठीक है, हटाओ। डन हो गया भाई, यहाँ पे लग डन हो गया, यहाँ रख दो। सर एक बार चला के दिखा, चला के दिखाना भाई। ये इसको रन करो, छोड़ दे। सर मेरा पेज भी दिखा देते आप आगे क्या आगे आगे नहीं, एक बार नीचे कर लो, आप इधर चला लो, नीचे फिर कर देना उसको चला के, फिर आराम
से लगा लो। इसको कनेक्ट की बैटरी दूसरी लाता हूँ फिर आपको। जी मेरे को ये दूसरी चाहिए ये नहीं लग रहा मेरा Students, continue with your work. We have Mangas. He's really impressed. So I want him to say something. चलो। I'm very impressed at the quick pace that everyone is assembling the robot. It's very impressive. We have around 30 more minutes to go. I'm completed. So, yes. Thank you, sir. Dear children, remember, once your robot completed, it's assembled. The last photograph which we want to go viral, to be seen by all the children of the world, is your robot in your hand and which you are going to display to us together. So please, after assembling it, do not keep it away. The moment I will say, show your product, you will be showing your robot. Is it clear? वाईफाई की बैटरी आ रही तुम्हारे अच्छी है। हाँ बोल दिया नहीं आ रहा भाई। देखना We planned to do it outside, but it was not possible. So I created this customized model. I created this customized and we have to abide by that. It is a workable model. It has to work properly, and that's
Very cool, very cool. You might fall, huh? Be careful. Those who have completed, please remain. Don't play with your robot. Remain seated. Don't play with your robot. Don't worry. Some students are raising their hand. Probably they need some volunteers or steward. Please go to the child and ask what is the problem. चलाना अरे चलेगा I again announce to all the students, if you need anything, please raise your hand. एक बार चलाना So that the volunteers can help you out with any component which is required. Also, if you have finished, since students who need things are raising one hand, then please raise both the hands so that your steward will know that you have completed and it is to be checked. Stewards, kindly check the ones which seems to be completed by the students.
seat, you'll be disqualified till the whistle blow. You need to be seated in your own seat. Show your agree board to the steward who is in charge of your rows. Once your steward is satisfied, then you just disconnect the wire from the battery and remain seated. When we are going to blow the whistle for the final call, we would be requesting all of you to put your robot agree board in your hand and show it to us. That's what we are going to do. But now, when the final whistle will be blown. Hello. Stewards, please be attention. Student raising hand, please go and ask what the problem. Please, stewards, please take kind attention. Hello. 13 के साथ देखो. If you want assistant, please raise single hand, and if you have completed your, then you have to raise two double hand. Okay. Stewards are requested to please volunteers, your patience, your dedication will only be fulfilled when we are able to achieve the record with all the students who have come here. So please help them. If they don't have any components, if they need any assistance, do not help them, but give the things which they require. Secondly, those who are raising both the hands seems to have completed assembling the robot. So I request the steward in charge of those rows to please go to the child, check the demonstration and approve if the demonstration is as per your expectations. 20 minutes are left, so I request you all to complete this task in the next 15 minutes. If you move from your seat, you'll be disqualified.
you're finished with the testing, kindly display it in the field. Slightly clean your table so that when we have a group photograph, it should look beautiful. Not only good, should look beautiful. And let us Indian feats scattered on the tables of the students from Bhopal school at Atmanirbhar Bhopal on 23rd January. कसम हो गई, बैठी गई ये। बैठी गई बेटा, बैठी गई। बिना उसका नहीं देते इसमें। ऐसा उल्टा चला ना इधर, इधर का ऐसा घुमा के चलो, इधर से ऐसा लाना आगे, इधर से ऐसा लाऊं? हाँ भाई डबल टेप है, डबल टेप। अरे बैटरी से नहीं चल रहा। नहीं, बैटरी वो डिस्चार्ज है। टीचर को कैसे पता है बन गया? उधर उसका आया अंदर, फिर उसका करेंगे। एक तो इसमें इतनी मिट्टी। पीछे से लेकर बैटरी गिर गई थोड़ी। तेरा बन गया? उधर से छोड़ना, पीछे से थोड़ा सा और फंसा। मुझे रिवर्सिबल टेप चाहिए। बैटरी चला। इधर वहीं से छोड़ दे। अरे वो गाड़ी हो गया पूरा। देखो थोड़ा चला के बंद कर देना, बिकॉज हम बैटरी नहीं है, हम लोग डिस्चार्ज कर दोगे तो बाद में नहीं मिलेगी।
15 minutes चले। बच्चों जरा देख लीजिए, हम चाहते हैं अपने टाइम फ्रेम के अंदर पूरी प्रक्रिया को खत्म करें। Double-sided tape, battery. Can we have double-sided tape and battery here? स्टूडेंट को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जल्दी से सारे काम को खत्म करें। चलो चल रहा नहीं चल रहा? चल रहा है भैया। फिर चल रहा है। भाई तेरे स्क्रीन में आ रही है, उधर देख। अरे उल्टा चला रहा है यार। हाँ भैया। आगे वाले का इसका चालू। बैटरी का ही। वंदना मैम, इधर आ जाओ। हो गया चालू हो गया, इधर से छोड़ ऐसा। तुषार सर इधर अपने आप नहीं चल रहा क्यों? चल रहा है ना, उसे दबा दे। तो बैटरी सुधीर सर, मैं रिक्वेस्ट सुधीर सर। तो आ जाएंगे। सुधीर सर, we need to give it. Now, how many students were tested? Please raise your hand. How many students were don't stand? Better please sit up. Sit down. Sit down. Very good. How many applause is not tested? Please raise your hand. I request the student to complete your vulnerability.
Because once this is already been tested by the student who has assembled it. Don't think that if we blow the whistle, that means it's the end of the activity. The end of assembling is there. Thereafter, the few children who are yet to show the demonstration continue, and finally we want the students to give us a positive response that they are all qualified for being part of most people assembling robots simultaneously. They understood. Timekeepers. Timekeeper, count down. कितना हुआ? इधर आ जाओ मेरे पास. 6 minutes left. Steward, जल्दी जल्दी काम खत्म करो. थक गई. My little steward. It's Steward Littles. Really, they are little stewards belonging from this university. They are also students. Wow. Five minutes. Beautiful. I'm so impressed. Sudhir sir. See. All are working.
4 minutes. Then will be 3, then 2. So be ready. Remain on your seats. If you misbehave, if you are indisciplined, the total event will be disqualified. I repeat seriously, if you misbehave, if you are indisciplined, the entire event will be disqualified. Rishi, I want you here when we are going to blow the final whistle. Rishi. 2 minutes left. I want that. Dear students, nobody will get from their seats. Be seated. If you need any help, please raise your hand. We are not done yet. 2 more minutes to go. Please be seated. Our timekeeper will be here, and once that 1 hour time will be over, we will have a whistle. After that, we will have a couple of minutes for taking photographs. I have a request to all of you. As Prashant ji is saying something, kindly pay attention to that. Please listen to him. आपने इतनी मेहनत से ये एग्री रोबोट बनाया है और इसका बहुत अच्छा विजुअल, बहुत अच्छी फोटो आनी चाहिए, है कि नहीं? इसलिए विसल होने के बाद एक बहुत सुंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करेंगे और उसके बाद अगली सूचनाएं आपको मिलेगी. I have information I would like to collect from stewards. Stewards, please pay attention. 1 minute is left. Have you finished? If not, please wait. Countdown has become. Please wait for the whistle to be blown for the final call. Thereafter, you still have 10 minutes to check the rest of the students' agribot. Kindly wait. Sir, आप इधर आओ. Whistle blow होएगी. पूरा दम लगाना है यहाँ. 30 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dear students, thank you very much for all your efforts. Please be patient. Please behave yourself. We are not done yet. You need to do an exercise with me. All of you are going to hold your robot model in your right hand, elbow straight. And I request my friends from media, my friends from photography team, all your models up in the sky, raise your elbow robots. straight. We would like to see them. Come on. 1600 students, yes. young scientists of Bhopal. Most likely we have made it. We will listen it from the GWR representative. But whatever efforts we are doing since last several months, let's show it to the whole world. भारत के प्रतिभावान छात्र, भोपाल भारत का दिल, और वहां से आई हुई ये प्रतिभा, उन्होंने किया हुआ कर्तृत्व आपके हाथों में ऊंचा करके हम अपने मीडिया के बंधुओं को दिखाना चाहेंगे.
1600 होनहार छात्र, प्रतिभावान छात्र, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में बहुत कुछ सीखा और अपने अन्नदाता किसान उनको एक मैसेज दिया कि हम उनके साथ खड़े हैं। विज्ञान, तंत्रज्ञान और इनोवेशन, उसके साथ उनका इनकम बढ़े, उनकी आय बढ़े, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोग बैठ जाएं और अपना मॉडल नीचे ले। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रिप्रेजेंटेटिव वो बताएंगे कि हम परीक्षा में पास हुए हैं नहीं, क्योंकि मीडिया के बंधुओं ने फिर से एक बार निवेदन किया है कि वो पिछली वाली फोटो अच्छी नहीं आई थी, इसलिए फिर से एक बार आप सारे लोग अपना मॉडल अपने दाहिने हाथ में पकड़ेंगे और एल्बो स्ट्रेट करेंगे। सभी को अपना मॉडल ऊपर पकड़ना है। भोपाल के 1600 यंग साइंटिस्ट यहां आके उन्होंने ये एग्री रोबोट वर्किंग मॉडल जो 4 अलग अलग चीजें कर सकता है उसकी प्रतिकृति बनाई है और ये एक अद्भुत कार्यक्रम यहां संपन्न हो रहा है। मुझे पूरी आशा है कि सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका हेलो, काउंटिंग शुरू होने वाली है बच्चों, आप लोग बैठ जाओ। आप बैठ जाइए, आपका हाथ नीचे कीजिए, मॉडल सामने रखिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। पानी की बोतल आप सबके सामने है और हम 10 मिनट में आप लोग को बाकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा, कोई वॉशरूम अभी नहीं जाएगा। आपके स्कूल से आई हुई टीचर्स थोड़ा आप लोग को देखना चाहती हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उस टीचिंग ग्रुप को जो बच्चों के बीच में जाकर जो भी वो चाहे वो कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन अब नहीं है, क्योंकि मेरी काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आप लोग अपने बच्चों के बीच में जाकर थोड़ा हमारे प्रोग्राम को वायरल करिए सोशल मीडिया में। सारे बच्चों से निवेदन है, कोई हॉल छोड़ के जाएगा नहीं, कोई जगह छोड़ेगा नहीं। अभी अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम होने वाला है, जिसका हमें इंतजार था, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो कार्यक्रम होने वाला है। और वो कार्यक्रम होने से पहले हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, हम कुर्सी से हिलेंगे नहीं। आर यू गाइज एक्साइटेड? व्हाट डू यू थिंक? हैव वी मेड इट? क्या लगता है, हमने जो इससे पहले चाइना ने बनाया हुआ रोबोट असेंबली का कीर्तिमान तोड़ दिया है या नहीं? हमें पता नहीं है। हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन अपने जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं वो बताएंगे और उनके कहने का हमें प्रतीक्षा रहेगी, इंतजार रहेगा। लेकिन मुझे आपकी प्रतिभा पे पूरा विश्वास है। तो अगली प्रक्रिया चालू करते हैं जल्द ही, और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, अवार्ड सेरेमनी वाला।
डियर स्टूडेंट्स, जब मैं मेरा प्रेजेंटेशन दे रहा था, मैंने बताया था कि अब तक इससे पहले जो 7 IISF हुए हैं, उसमें 14 विश्व कीर्तिमान बने हैं या टूटे हैं। हो सकता है हम आज एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। हो सकता है ये 15वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके सबके सहयोग से बन सकता है। हम सबको इसकी प्रतीक्षा रहेगी कि क्या सही में हम उनकी परीक्षा में खरे उतरे हैं, क्या सही में उनके मानकों को हमने पूर्ण किया है। और बहुत जल्द ही जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो प्रतिनिधि आए हैं, वो हम सबके सामने उनका रिजल्ट साझा करेंगे। जैसे इस कार्यक्रम की प्रक्रिया होती है, ये प्रतिनिधि ये सर्टिफिकेट बना के लाते हैं। अगर हम परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हमें मिलता है, अगर फेल होते हैं तो नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है, जो सर्टिफिकेट उन्होंने लाया है वो हमें मिलेगा क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या वो सर्टिफिकेट हमें मिलेगा? क्या हमने चाइना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? अब थोड़ा सा चुपचाप बैठ जाओ बच्चों, अब हमें एक्साइटेड होने दो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे स्टूवर्ड्स को कि अपना रेफरेंस नंबर फॉर्म में नोट करें। विटनेस एंड टाइम कीपर, यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू मेंशन the reference number of our event in your respective forms. The reference number is SF-026. SF-026 365-0501 202 308 2306 MPAR. All of you are supposed to write this reference number in the forms provided by you. In that form, the activity title is Most People Assembling Robots Simultaneously, which is there on the display board. I repeat again, all these stewards need to write the activity name as, title as, Most People Assembling Robots Simultaneously. Date is 23rd January 2023, Manit, Bhopal, India. And the reference number is, I repeat, SF-026 365-0501 201 308 2306. With this number, you can understand the number of our application, which is going more than in lakhs. We are going to start our valedictory ceremony as well as the award ceremony if we have achieved by breaking the record of Hong Kong. But it's understood. The number was 279 only, and we had 1,600 students who were assembling the robots. So as far as my knowledge is concerned, and probably my students will agree, that we have already broken the record. Yes? But everything should be official. Not only breaking the record with one more than the previous team, but it should be 4 folds more than the previous team. And my dear children, we got this opportunity to conduct this program only because we had certain organizations who wanted that the children of classes 6 to 8 should also be the part of the mega event known as IISF Bhopal. May I request Dr. Jagveer Singh ji to come on the dais.
Dr. Vandana to please come on the dais. May I request Dr. Sudhir to please come on the dais. I also request Sudhanshu Rati sir to please come on the dais. Sudhanshu Rati sir, if he is present, may I request you to please come on the dais. Professor Shailendra ji, please come on the dais. अब मेरा नाम तो सबको पता है, प्रशांत जी का नाम पता है, इसलिए मुझे बाकी का नाम बोलना पड़ा है। मगर अगर मैं कहती मेरी टीम स्टेज पे आओ, तो मुझे पता था ये सारे लोग स्टेज पे हाजिर होंगे, क्योंकि वी आर एज अ टीम। आइए ना मैम। प्यारे छात्रों, जिस घड़ी का इंतजार था, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो पल आ गया है। जैसा मैं बोल रहा था, जिस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या हमने चाइना का रिकॉर्ड ब्रेक किया या नहीं, वो सुनने का क्षण आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं फिर से एक बार आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमने चाइना का रिकॉर्ड तोड़ा है? मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्या तोड़ा है? यस। क्या हमने नया विश्व कीर्तिमान बनाया है? आपकी आवाज इतनी बुलंद है कि मुझे तो कोई शंका नहीं है। आप सबको यहां आशीर्वाद देने के लिए, आपको मार्गदर्शन करने के लिए और इस वैलिडिक्टरी सेरेमनी के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी यहाँ हमारे साथ उपस्थित है। मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पे आ जाए। ये वाला कार्यक्रम अलग अलग मंत्रालय कराते हैं। इस बार डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको कर रहा है और उसकी पूरी जिम्मेदारी किसी के साथ है, तो प्रोफेसर सुधांशु व्रती वो साथ में है। साथ में संजय मिश्रा जी जो डीबीटी के साइंटिस्ट है वो साथ में है। इंसा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद रानड़े हमारे साथ है और विज्ञान भारती जो संगठन इस सारे आईआईएसएफ की प्रेरणा है, उसके जनरल सेक्रेटरी प्रवीण रामदास जी हमारे साथ है। ये सारे अतिथियों का हमारे यहाँ मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा और इन्हीं के गाइडेंस में, इन्हीं के मेंटरिंग में हम आज का ये कार्यक्रम कर पाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप पोडियम के आगे आ जाइए। जैसा कि मैंने बताया था कि इससे पहला वाला जो रिकॉर्ड है वो हांगकांग उन्होंने बनाया था और संभवतः हमने वो रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो आज वो पल, वो क्षण जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, आप सारे छात्र जिनके साथ ये ट्रेनिंग हो रही थी, हम आपके स्कूलों में आए, आपके साथ समय बिताया और आप पूरा आधा दिन यहाँ पे आके हमारे साथ रह के भोपाल के होनहार प्रतिभावान छात्र, मुझे लगता है कि उन्होंने नया कीर्तिमान बनाया है। आपने जो मेहनत की थी उसकी रेप्लिका, उसकी प्रतिकृति आप ही के दो छात्र हमारे साथ लेके आए हैं और वो मंत्री जी को दिखा रहे हैं कि ये एग्री रोबोट कैसे था, कैसे बनाया गया, कैसे काम करता है। बुलाया ऋषि को, बुला लो क्या? आप भी रेडी? नंबर
टोटल हो गया 2 मिनट हाँ 2 मिनट में आप समय ले रहे हैं जस्ट 2 मिनट The number you said, right? हाँ हाँ टोटल नंबर इज 1535 नाउ वी आर जस्ट गिविंग द क्वालिफाइड नंबर जस्ट 2 मिनट कम उम्र के बच्चों के लिए भी ऐसे पजल के मॉडल टॉयज के रूप में बना के देंगे तो एक वापस भारतीय परंपरा जिसका हर खिलौना एक नई शिक्षा और एक नई माइंड को डायरेक्शन देता था, ऐसा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। उसमें भी हमको मिलके साइंस को इसको मिलके काम करना चाहिए। और इसमें दो और बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं कि अगर हम टॉयज ऐसे बनाएंगे तो एक तो पॉजिटिव एनर्जी बच्चों में आएगी, दूसरा जो डिस्ट्रक्टिव टॉयज अभी चाइना से आ रहे हैं विद केमिकल कलर्स जो बच्चा जाने अनजाने में मुंह में ले लेता है और उसके को नुकसान होता है, उससे भी बचत होगी। तो ये एक आज नया डायमेंशन अपन ने तय किया कि साइंस डिपार्टमेंट शुड आल्सो डिज़ाइन ऑल दिस काइंड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स के पजल के रूप में देके उनसे एजुकेशनल टॉयज और उसका रिप्रोडक्शन कैसे बार बार किया जाए उसके बारे में अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो कुछ कंपनियां हैं मध्य प्रदेश में जो इंटरेस्टेड है कि अगर उनको कोई डिज़ाइन करके दे तो वो अडॉप्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। Incidentally, not only they have broken the China ties, they have broken the China record also. Yes. We have broken the record and we made it बहुत that it should be made in India. बहुत Each component is made in India. Sir. बहुत बहुत बधाई। और इस बात की भी बधाई कि आपने चाइना का रिकॉर्ड एक चीज़ में तोड़ा। मुझे विश्वास है आने वाले 4 सालों में चाइना से हर चीज़ का रिकॉर्ड हम तोड़ के हम काफ़ी चाइना से आगे बढ़ेंगे। क्यों बच्चों, विश्वास है ना? जोर से बोलो, विश्वास है? चाइना के सब रिकॉर्ड भारत का युवा तोड़ेगा और ये जो आने वाली पीढ़ी है जो वास्तव में भारत की असली मालिक बन के जब ये कमान करेगी तो दुनिया की कोई शक्ति इनके सामने नहीं टिक पाएगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 मिनट हमारी वो अवार्ड सेरेमनी आइए। GWR का है। इसके पीछे में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एजुकेटर वहाँ से आए। हाँ बस ऋषि को सर एक मिनट साथ में रहिए। पूरा 6 जगह खड़े हो ये तो खुशी होगी ना। अनाउंस करेंगे। अच्छा उससे आइए आइए देखो थोड़ा सा आप पहले अनाउंस कर दीजिए। Okay. आई होल्ड इट फॉर यू। गिव मी। You want me to make an announcement now? Hello. Hello, everybody, boys and girls, and ladies and gentlemen. Okay. अरे बाप रे, I इतनी request बात all media people to go आप below. लोग करोगे तो सुनोगे कैसे? मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। हम साइलेंस करके भी रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। अभी थोड़ी सी शांति। Are you ready to listen what Rishi is saying? Because you know you have actually broken the record. That was if it was one more than 279. But this had been 4 folds. And what is the exact number is what he is going to say. And then we would be receiving the main certificate which comes all the way from London. So please wait for the moment.
Hello, everybody. So I will not take too much of your time. I will come straight to the point. The record to beat was 279, and what you have achieved is a fantastic 1484. Sorry about that. 1484 is the new record. So congratulations. प्रशांत जी, प्यारे छात्रों, आपने एक कमाल कर दिखाया है। आप सबकी मेहनत रंग लाई है और 1535 बच्चे जो यहाँ उपस्थित थे, 1534 बच्चे जो उपस्थित थे, लगभग 1400 से अधिक 1484 बच्चे ऐसे थे जिनका मॉडल वर्किंग मॉडल था, और हमने जो पुराना विश्व कीर्तिमान है उसको तोड़ के एक नया विश्व कीर्तिमान आज इस भोपाल की धरती पे बनाया है। हर IISF में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता या तोड़ा जाता था। उस श्रृंखला को हम आगे ले जाते हुए इस बार भी एक नया विश्व कीर्तिमान यहां बना रहे हैं। आप सबके सहयोग के कारण यह संभव रहा है, और इसके सबसे पहले हकदार आप लोग हैं। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी के लिए। थैंक यू। मुझे पता है आप भूखे हैं, लेकिन आपको यह सुनना आवश्यक था। मुझे पता यह भी है कि आपके जीवन में आज का एक क्षण, आज का ये पल जो आपको इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बनाता है, वो जिंदगी भर याद रहेगा। जीवन भर ये सीख आपके साथ रहेगी। हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ जाएंगे और वोट ऑफ थैंक्स करेंगे, लेकिन कुछ स्कूलों को बहुत जल्दी यहां से निकलना पड़ेगा। तो बहुत जल्द या 1 या 2 मिनट में हम वोट ऑफ थैंक्स करेंगे, और उसके बाद हम बहुत अनुशासनिक पद्धति से डिसिप्लिन मैनर में लाइन बना के इस हॉल को छोड़ेंगे। जिस शानदार तरीके से हमने आज का एक कार्यक्रम संपन्न किया है, तो वापसी में भी वैसा ही अनुशासन आप सबसे अपेक्षित है। जब आप यहां से बाहर निकलेंगे तो आपको एक लंच पैकेट और वाटर बॉटल मिलेगा, और आपकी बसों में वो आप लंच ले सकते हैं। लेकिन लाइन से ही हमें यहां से जाना पड़ेगा। एक अद्भुत क्षण, आप लोगों की मेहनत, आपके शिक्षकों का सहयोग, आपके स्कूल के मैनेजमेंट का सहयोग, और यहाँ हम ऑर्गेनाइजर्स की इच्छा थी कि IISF में होने वाला ये जीत का, ये विश्व कीर्तिमान बनाने का जो प्रयास है वो सफल हो। और आप सबकी मेहनत के कारण, आप सबके परिश्रम के कारण ये हो पाया है। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि 50 से अधिक NIT और अन्य संस्थानों के विद्यार्थी यहाँ पे वॉलेंटियर बोल के दिन रात लगे थे, और इसलिए उन सारे वॉलेंटियर्स के लिए एक बार तालियां बनती है। अगर ये लोग नहीं होते तो हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाते। Mayuri madam, please come to stage.
मैं प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह को मंच पे बुलाता हूँ। मैडम आइए एक बार। प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह। कहाँ गए? डॉक्टर मयूरी दत्त, प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर जगवीर सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वंदना चौधरी, इसरो के साइंटिस्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुधीर कुमार जी, आप सभी को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। इस कार्यक्रम के लिए बहुत लोगों का योगदान रहा है और वो आभार प्रदर्शन के लिए मैं प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं। इस कार्यक्रम में 2 विटनेस जो एनआईटी के प्रोफेसर्स रहे हैं वो थे, और टाइम कीपर उनको भी हमने यहाँ बुलाया था। इन सबका सम्मान, और साथ ही मेरे अपने मित्र जिन्होंने आज बहुत सुंदर टॉक दिया, ऐसे प्रोफेसर घंटी मूर्ति, उनको भी हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप सबने आज का ये क्षण, आज के ये पल, ये अनुभव अपने मस्तिष्क में बनाए रखे हैं, और आने वाले सालों साल ये आपके साथ, ये मेमोरी साथ चलती रहेगी। हेलो। नहीं, मूर्ति जी को देना है, 2 विटनेस को देना है, 2 टाइम कीपर को देना है बैक। मूर्ति जी को हम क्या देंगे, बाकी बाद में देंगे। मूर्ति जी को देना है। हेलो। Hello, I request Prashant ji to present a memento to Sudhir ji. विटनेस को बुलाओगे, सुधीर जी देंगे विटनेस, वो क्यों देंगे? नहीं तो आप थोड़ा बता देते हैं। सुधीर जी को रिक्वेस्ट कीजिए, विटनेस देना है। जगवीर जी को रिक्वेस्ट कीजिए, एमटी को, मैडम को रिक्वेस्ट कीजिए। ऐसे यहाँ के लोगों को ही आपको बोलना है, 4 लोगों को देना है। मंत्री जी को बुला लीजिए। ऐसा कैसे सर? माननीय मंत्री जी, उनका मंच पे आगमन हुआ है और उनसे हम कुछ फॉर्मेलिटीज करना चाहेंगे। सर, आपसे निवेदन है, इस कार्यक्रम की संपन्नता के लिए कुछ लोगों ने हमें सहयोग दिया था, और जो विटनेस यहाँ पे आए थे, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि को मदद कर रहे थे, जो टाइम कीपर, भोपाल के कुछ पीटी और स्पोर्ट टीचर, उन सब का सम्मान करना चाहेंगे। और मेरे अपने मित्र आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर घंटी मूर्ति, जो आज के रिसोर्स पर्सन थे, इनका भी हम सम्मान करना चाहेंगे। मैं डॉक्टर मयूरी दत्त को बुलाता हूं कि आगे की प्रक्रिया जारी रखें। सर, आपका एक्सपीरियंस बताइए। ये घंटी मूर्ति सर हैं जिन्होंने बच्चों के साथ बहुत मिला हुआ उनकी
आज हमने आज टॉक करी, बच्चों को इसी विषय में बताया है। और मैडम बोलिए। May I request Minister Sir to please felicitate Gantimurthy Sir. चलिए और दे दो। Next, I would request the witnesses of the event to please come on the dais. थैंक यू सर। Witness Manoj Arya ji to be felicitated by Minister Sir. सर, इन लोग के सिग्नेचर आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे साथ सर 2 टाइम कीपर इवेंट के लिए आते हैं, जो विसिल ब्लो करने से प्रक्रिया शुरू होती है और जब वो उसको क्लोज करते हैं उसके बाद वो रुक जाती है। तो हमारे 2 वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ द इवेंट, द 2 टाइम कीपर्स, मे आई हैव देम ऑन द डाइस प्लीज। द टाइम कीपर्स ऑफ द इवेंट। मुझे सर माफ़ करिए, मुझे नाम नहीं पता, सब भोपाल के हैं और मैं बाकी कार्य में व्यस्त थी तो थोड़ा ये चीज़ नहीं रख सकी। शैलेंद्र जी, आपको नाम पता है? खुशी, यस। हाँ, नाउ आई रिक्वेस्ट खुशी पांडे जी को मेमेंटो देके और प्रेजेंट करें। देन टाइम कीपर को हम बुलाना चाहेंगे। या आइए शुभांश, एक मिनट, दीपक प्लीज कम हियर। या दीपक जी, हाँ, टाइम कीपर हैं। अब शुभम से हम जो है आए हैं यहाँ पर और मंत्री जी से जो है अपनी मोमेंट लें। थैंक यू वेरी मच। नाउ आर यू The main person who really blessed us with this beautiful certificate, which we have owned it with our own work, which was accomplished by none other than the students of 6 to 8, sir. ये 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चे थे, 13 स्कूल से आए थे भोपाल के। इनको 1 दिन की हमने ट्रेनिंग दी थी और आज इन्होंने 15 मिनट में ये रॉकेट असेंबल करा। मे आई रिक्वेस्ट ऋषि नाथ जी टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड वी रिक्वेस्ट मिनिस्टर सर टू फेलिसिटेट आवर एजुकेटर फ्रॉम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 70 एजुकेटर्स सर पूरे दुनिया में हैं, जिनमें से एक ऋषि नाथ जी हैं जो लंदन में कार्य करते हैं। ऋषि का ये दूसरा इवेंट हमारे साथ है, गोवा में भी हमने किया था, तो तब भी ये थे, हमने रॉकेट बनवाए थे बच्चों से और 550 रॉकेट लॉन्च करवाए थे। यू विल सो कोऑर्डिनेटर्स तो हम करवा लीजिए सर। हम लोग को आप ब्लेस करेंगे, घर वाले हैं, बट हम आपके हाथ से कुछ लेकर जाना चाहते हैं। मे आई नाउ रिक्वेस्ट यू टू फेलिसिटेट आवर कोऑर्डिनेटर्स। डॉक्टर सुधीर प्लीज आइए। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट तुषार सर जी टू प्लीज कम ऑन द डाइस। अरे वाह, सर सजा के दे रहे हैं, हम भी खड़े होते हैं। शैलेंद्र जी प्लीज, मैं आपको इधर से घूम के आना होगा, ये मुझे पकड़ा दो। हाँ लेंगे हम तो सब, लीजिए अभी तो अपना सामान लेके चलते हैं। प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह जी,
Dr. Jagveer Singh ji from MOES. Dr. Vandana from MOES, Delhi. साथ में रखती हूँ. तुषार सर जी from Ellen Group of Schools. They're the institutes, right, Ankita? So he is one of the well-wishers. Thank you. May I request Professor Prashant Kodgare ji? अब मेरा नाम कौन बोलेगा? Now, very important, most important person of this activity who organized from beginning, and you know that selecting the model also, our good friend Dr. Mayuri Dutt. So I request Honorable Minister to kindly felicitate her. Thank you so much, sir, and thank you, Mayuri, and thank you all team. थैंक यू. नहीं, इसको रखना है. बैग तो दिलवाया नहीं सामने से. बैग तो सामने से दिलाया. कौन सा सामने? हमें बैग तो दिलाया नहीं आप लोगों ने. मेरे हमें बैग तो दिलाया नहीं आप लोगों ने. मैम पीछे से रिसाइकिल हुआ है. बैग आपका स्टोर में है. ठीक है. आप भाड़ा दे रहे